दूसरा जो है हेलो एल्केन्स है, जिसको हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तीसरा है एल्कोहल्स, चौथा है एल्डिहाइड्स, और पांचवा है कीटोन्स, और छठा है कार्बो एक्सिलिक एसिड। ये जो है 6 जो है तुम जो है टाइप्स के जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जान चुके हो। इनमें से पहला है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स। तो हम फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी? हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, एक हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड मेड अप हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन से सुनने से नाम लग रहा है इसमें दो कंपाउंड होगा। एक होगा क्या? ये दो कंपाउंड से मिलकर बना होगा। एक होगा क्या? हाइड्रोजन, दूसरा होगा कार्बन। तब जाकर के क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात जब होगी तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस इक्वल टू हो जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मीथेन ले लीजिए आप। हाँ, मीथेन के बाद आप, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। हाँ, CH4। हाँ, मीथेन CH4। मीथेन CH4 होता है ना। इथेन। हाँ, भूल गए हैं, कल ही पढ़ा है। C2 इथेन का क्या हो जाएगा? C2H6। और इथीन का क्या हो जाएगा? C2H4। और इथाइन का क्या होगा? C2H2। ये हमने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स हैं बिकॉज दे आर मेड अप ओनली टू एलिमेंट। क्यों हाइड्रोकार्बन है? ये दो ही तरह के एलिमेंट से बना हुआ है। वो दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और कार्बन। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी बना होगा तो हम उसको क्या कह देंगे? हाइड्रोकार्बन। इतनी बात दिमाग में आई? तो हाइड्रोजन और कार्बन ये जो है दो एलिमेंट है, जिसका जो है, जिसका क्या होता है? दे आर मेड अप टू ओनली टू एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। मेन सोर्स क्या है हाइड्रोकार्बन का? इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स क्या है? पेट्रोलियम, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल समझता है क्या? विच ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरग्राउंड ऑयल डिपॉजिट। हमारे अर्थ के अंदर क्या है? इसका डिपोजिशन है, जहां से हम लोग क्या करते हैं? इसको ड्रिलिंग करते हैं और वेल एक बना करके उससे निकाल लेते हैं। नेचुरल गैस अकर अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट आल्सो कंटेन हाइड्रोकार्बन्स। अब कुछ टाइप्स क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन के? हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले हम उसको जान लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अ हाइड्रोकार्बन इन विच the carbon atom are connected by only single bond is called saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon also called alkane. साइड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और हम किस नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से। किस नाम से?
एल्केन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो एन एल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन, तो हम क्या कह सकते हैं? एल्केन भी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड, जिसमें क्या होता है? कार्बन एटम कनेक्टेड रहता है ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। किससे कनेक्टेड रहता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। किससे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। कौन कौन कनेक्टेड रहता है? एल्केन। एल्केन भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन forms the double or triple bond in alkane. Name of this saturated hydrocarbon end with En लगा रहेगा, इसके लास्ट में ANE लगा रहेगा। तो मीथेन जो होता है CH4, इथेन क्या होता है C2H6, प्रोपेन C3H6, और ब्यूटेन क्या होता है C4H10। तो ये जो जितने भी हैं ना, ये सभी क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? जिसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन का देखें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन एक ही बात होता है। तो इसका हम जब देखेंगे तो CnH2n+2 जो होगा, n जहां पर नंबर जो है कार्बन एटम का होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्केन, ये जो है आपका, तो हम इसको कहेंगे एल्केन हैज वन कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल्स, देन n इज इक्वल टू 1। हाँ, फॉर्मूला इसका क्या होगा? CnH2 × 1 + 2 और CH4। हाँ, तो मीथेन की जब बात होगी तो मीथेन क्या होगा? मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? 1। हाँ, इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? 2। नंबर ऑफ प्रोपेन में कितना होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम? 3। ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5। नाम से ही लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स और एल्काइंस। अब एल्कीन्स और एल्काइंस जो बचा है, इसको हम किस ग्रुप में रखेंगे? किस ग्रुप में रखेंगे? इसको जो है एल्कीन्स और एल्काइन ग्रुप्स में का होगा। ये एल्कीन और एल्काइंस जो होगा किस ग्रुप में होगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन ग्रुप्स का होगा। तो हम जो है हाइड्रोकार्बन, अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो सेचुरेटेड देखा तो अनसेचुरेटेड भी है। तो ये ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 2 कार्बन एटम क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं डबल बॉन्ड से। अ हाइड्रोकार्बन इन विच the 2 carbon atom are connected by double bonds or triple bonds is called an unsaturated hydrocarbon. An unsaturated hydrocarbon. Ethene is the best example of the unsaturated hydrocarbon, right? Ethine is also, you can say, the example of the unsaturated hydrocarbon. Double bond is formed by the sharing of 2 pairs of electron between the 2 carbon atom, where triple bonds is formed by the sharing of the electrons pairs between 2 carbon atom. Unsaturated hydrocarbon obtained mostly from the petroleum by process of cracking. Unsaturated hydrocarbons are 2 types: those containing carbon double bonds, alkenes, and those containing carbon triple bonds, alkynes, right? And alkenes, first I will discuss about the alkene. So what do you mean by alkene? Someone wants to know, that time you can say the definition of the alkene.
unsaturated hydrocarbon, an unsaturated hydrocarbon in which two carbon atoms are connected by double bond. Two carbon atoms are connected by double bond is called alkene. Is called alkene, right? Is called alkene. Is called alkene. Alkenes contain a double bonds between two carbon atom, which is formed by the sharing of two electron pairs. CH3, CH, double bond CH2 are two alkenes because they contain double bond between the two carbon atom. आ रहा है समझ में? जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, where n is the number of carbon atom in its molecules. C2H4, name of the molecular formula. C2H4 कॉमन नेम ऑफ द इथीन एंड इथिलीन. इसको हम लोग इसका कॉमन किसका कॉमन नाम है? ये इथीन और इथिलीन का. ठीक है. एल्काइन क्या होता है? एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम कनेक्टेड बाय द ट्रिपल बॉन्ड. कितने बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे? तो ये कहलाएंगे एल्काइन. ट्रिपल बॉन्ड. एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच the two carbon atoms are connected by the triple bonds is called an alkyne. The general formula alkyne का CnH2n -2, where n is the number of carbon atom in one molecules of alkyne. ये हो जाएगा. समझ में आ रहा है? कॉमन नेम इथाइन का क्या होता है? एसिटिलीन. क्या? एसिटिलीन. कॉमन नेम क्या होता है इसका? एसिटिलीन. इथेन और इथाइन आर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स which are the formed by the sharing of electron between various atom. Between the various atom. Right? You have studied yesterday also these points. Electron dot structure, structure of ethane, structural formula of the ethane. You have read? Ethane, ethene or ethine. Have you read about this? And this was noted in your notebook also yesterday. This point. I hope some question also I have given for completing. Have you completed it? Why haven't completed? Why? What you don't understand? Identify alkanes. LKS, please give your notebook and I can describe few questions. Here is the 1 minute. Give you a pen also. This is the here. Here is the identify the alkyne. How can you identify? These are the groups. Who is the alkyne? Identify the alkyne. So first you will use this formula here. Which formula? CnH2n -2 is equal, n is equal to given 2 and 3. So Cn, n first you will take 2, then 2 into 2 minus 2, 2H4 -2. What will happen? 2H2. 2. What is this? This is ethine. You can say acetylene also is this. What you haven't understand in it? Again, suppose here is given
C2H नहीं C3H2 in n is equal to 3 here and minus 2. What will happen? C3 H4. What is the formula of it? इथेन क्या है? इथेन इथाइन Ethene. इथेन इथेन इथीन ना लास्ट वाला जो होता है. Ethine is the last. हाँ इथाइन. First ethane, हाँ then ethene, इथीन ethine. इथाइन इथाइन. Ethine is the last point. Yeah. So here is the what? इथाइन. C3H4. Ethene. Ethene. Ethine is this. C2H2. This is the what? इथीन. Ethene. अच्छा. Right? Or when I will calculate the ethane, so what will happen? C2 Huh? H4 C? C2 H6 ना. C2H6. So then this will be plus here and 2 is required here. H2 into 2 plus 2. This is called ethene. C2H6 is the ethane. Again same way you will calculate here the alkanes. Alkanes, it means alkenes here when you will calculate, the first you will write here what? The formula of CN H2N. So Cn value first you will take n is equal to 2. So Cn, so n C2 H2N and 2 to the 4. C2 H4 is here completed. C2H4 is the what here? C2H4. Yes. C2H4 इथाइन लास्ट वाला जो भी इथाइन है. It's alkane. Alkane. You can identify these alkanes here. Alkane, alkene. Alkene is this here and alkene, alkene. Alkene, alkane. Alkane is here what? Alkane. CN H2N plus 2. When you will write here, so this is the alkane. How can you write? 2 plus 2 into 2 plus 2. This is the 6 and this is the alkane. This is the alkane. What? Alkane. Understood? Same way you will calculate the entire point and your answer will come. But required to understood such formula which was taught by me yesterday and the same formula written by me here in your notebook, and you will revise this formula and solve fewer point on it. Then I hope you will understood. Right? Yes, sir. You will try again this formula. A golden rule is here. What? We now going to tell you a golden rule which will you help you to know the ones whether given the hydrocarbon is an alkane, alkenes or alkynes. It is like this. Look a formula of given hydrocarbon and compare number of hydrogen atom with the number of carbon atoms present in it. If the number of hydrogen atom is 2 more than double the number of carbon atom, then it will be an alkane. Understood? If the number of hydrogen atom is 2 more than double the number of carbon atom, then it will be an alkane. If the number of hydrogen atom exactly equal to double the number of the carbon atom, then it will be an alkane. And if the number of hydrogen atom is too less than double the number of carbon atom, then will be an alkyne.
Understood? Few formula I want to write just the same way. You can revise this formula for calculating such a L. Here is this. Suppose when you want to calculate the alkenes, so you will use general formula CN H2N. This is the simple formula where N is equal to 2, right? Again the CN H2N with N is equal to 3, right? When CN H2N plus 2, I wrote formula above also, but again I want to write for and for your understanding. This is good for you. You will use the same way, and you will calculate this. And the alkyne is this. This is the alkyne, alkane, alkene, and alkene. It's a formula of alkenes. General formula of alkenes. Same way alkenes, this formula is also alkenes. So alkane, alkene or alkynes, three things is important for you. Next you will read about the cyclic hydrocarbon. What? Cyclic hydrocarbon. Cyclic hydrocarbon. Cyclic hydrocarbon. Cyclic hydrocarbon, a straight chain of hydrocarbon. Cyclic hydrocarbon is the straight chain hydrocarbon and branch chain hydrocarbon. There are some other hydrocarbon in which carbon atom arranged in the form of ring. Such hydrocarbon is called cyclic hydrocarbon. Such hydrocarbon is cyclic hydrocarbon. A straight chain of hydrocarbon, branch chain hydrocarbon. There are some other hydrocarbon in which carbon atom are arranged in the form of ring. Such a hydrocarbon is called what? Such hydrocarbon is called क्या? Cyclic hydrocarbon. The cyclic hydrocarbon may be saturated or unsaturated. Saturated and unsaturated both. This will become clear from the following example. A saturated cyclic hydrocarbon is cyclohexane. A saturated hydrocarbon, cyclic hydrocarbon is what? Cyclohexane. What? Cyclohexane. Hexane. Cyclohexane, it means what? Cyclohexane 6 C6H12. The formula of cyclohexane. The formula of cyclohexane C6H12. Molecules of the cyclohexane contain 6 carbon atom. How many carbon atom? 6 carbon atom. 6 carbon atom. Right? 6 carbon atom is here. And 6 carbon atom arranged in the hexagonal ring. In hexagonal ring, such like this. Hexagonal rings. Which types of ring? Hexagon. Having 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, और इसमें 2 हाइड्रोजन एटम भी क्या रहेगा? अटैच रहेगा. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है इस तरह होगा, जो यहाँ पे शो है. ऐसे 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 ऐसे. फिर यहाँ से तुम इसको खींच सकते हो ऐसे, फिर यहाँ से तुम खींच सकते हो ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर
यहाँ से ऐसे। ये आपका क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका? किसका? साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। क्या होता है? C6 हाँ H12। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर साइक्लोहेक्सेन का देखेंगे, हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स dots in place of every single bonds in it. Structure formula. Electron dots the same way you will draw here. Cyclopropane. Cycloalkane, first you know. The saturated cyclic hydrocarbon is also called cycloalkane. Cycloalkane. Cycloalkane, it mean what? Cycloalkane, you can say it saturated cyclic hydrocarbon. What? Saturated cyclic hydrocarbon. Yes. Saturated cyclic hydrocarbon. Cyclohexane is a cycloalkane having 6 carbon atom in its molecules. You can say then cyclohexane is also cycloalkane. Why? Because it has 6 carbon atom in its molecules. Cycloalkane with less than 6 carbon atom, right? Cyclopropane. What is the cyclopropane? Cycloalkane having 3 carbon atom in rings is called, right? Called cyclopropane. C3H6. Cyclopropane. Cyclobutane, that times 4 carbon atom in the ring, then cyclobutane. Then its formula C4H8, right? Cyclopentane, carbon atom, 5 carbon atom in the ring, then cyclopentane. C5H10, right? The general formula of cycloalkane is what here? You can write here CnH2n, right? Which is the same that of alkenes. This formula is same way, just like alkenes you have a calculated same way. This formula also you can apply for the finding of cycloalkane also, right? An unsaturated cyclic hydrocarbon is benzene. An unsaturated cyclic hydrocarbon is benzene. Formula of benzene, you know, C6H6, because it is made of 6 carbon atom and 6 hydrogen atom also. The structural formula you can draw here also in this way, right? C H C double bond H here, right? Double bond is here, right? H is here, C, are you understanding? Yeah. Okay.
Next, I want to say you here the electron dot structure of benzene has been obtained putting two electron dots in place of the every single bonds and four electron dots in place of every double bonds in its structure formula. Understood? Same way you will draw this. Huh? Here is also drawn. Hmm? Now, unsaturated cyclic compounds like benzene are called aromatic compound. Benzene is unsaturated cyclic compound, right? So these types of unsaturated cyclic compound, you can say also what? Aromatic compound. Which types of compound? Aromatic compound. Aromatic compounds. Right? Aromatic compounds. What? Aromatic compounds. Aromatic compounds. Right? Aromatic compounds. Aromatic compounds. Molecular formula of cyclopentane you have seen ever? C5H10. Huh? Where is the 5 carbon and pentagonal rings is just found here? Connected the single bonds. Huh? You can draw this also. Huh? Electron dot by the electron dot structure, a structural formula of the cyclopentane you can draw. No dot in it. Okay. So naming of the hydrocarbon. Some naming I will discuss here. A child may be called Bunty at home. Suppose तुम्हारा घर का नाम क्या है? घर का नाम बंटी है तुम्हारा. तुम्हारा घर का नाम क्या? अच्छा, हनी. लाइक हनी. और बाहर में लोग तुम्हें क्या कहते हैं? विराज. रियल नाम तुम्हारा विराज है और तुमको जो है घर में लोग प्यार से हनी कहते हैं क्योंकि शहद की तरह तुम मीठा है, इसलिए तुमको लोग प्यार से क्या कहते हैं? हनी. तो हनी कहते हैं तुम्हें प्यार से. तो उसी तरह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नाम होते हैं. उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने नाम होते हैं? दो नाम. ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नाम होते हैं. क्या रिस्पॉन्स दे इसको? मैसेज कहाँ से होता है रे? हेलो, यहाँ से मैसेज उसी को दाबिए कि कहाँ से? ये अच्छा, दाबिए एक बार. नहीं नहीं, ये नहीं, ये कीजिए. इसको दाबिए, चैट को ही. कौन चैट को? वही जो आ रहा है लिखा हुआ, ये. हाँ, उसको दाबिए एक बार. रिप्लाई का ऑप्शन है. कहाँ है रिप्लाई? ये पिन दी मैसेज. पिन करेंगे तो फिर वो सबसे ऊपर आ जाएगा. क्या होगा फिर? वो मैसेज कमेंट में सबसे ऊपर आ जाएगा. तो करना कैसे है? तुम लोग पर दिन करता है ये. हमको भी नहीं पता. अरे हमको भी पता नहीं. क्रिएट हाईलाइट, लाइटिंग, क्लोज, फ्लिप, म्यूट, इफेक्ट पिकर. कैसे इसको रिस्पॉन्स दें? यहाँ से दें क्या? तो नहीं पता. ये क्या होगा? स्टार्ट क्वेश्चन. ना ना, तो पोल हो गया. हमको भी नहीं पता सर. यहाँ से हो सकता है. देखो तो हो गया. हाँ, इंडियन एयरफोर्स.
सूत्र लिखेंगे कैसे, वो तो नहीं पता हमको भी, शायद लिखा, शायद नहीं पता है, नहीं पता। नहीं कभी याद इसकी। चलो छोड़ो, नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा था हाइड्रोकार्बन की बात। चलो इसको थोड़ा जो है ना हम लोग क्लोज करते हैं, तब फिर बात करते हैं।